a fireside chat series. As you know, we celebrate the journey of promising founders from the Indian crypto community with this particular initiative. But before we get into the proceedings of this particular episode, I'd like to share some developments from last year in the world of blockchain and cryptocurrencies. Right. So there's a lot that happened, but ballpark headlines. Last year was a fantastic run for the industry. The market cap of cryptocurrencies increased from 980 million USD to about 2.2 trillion USD. Right. So this is the price point that it was closed at. In the middle, you know, it even went up to about 20% north of 2.2 trillion US dollars market cap. We saw the first ever IPO for blockchain and crypto company. It happened in the US, and the company was a crypto exchange. It's called Coinbase. Did a $68 billion opening. If you look at the highest valued non-tokenized companies in India, there are exchanges. Two of them, in fact, turned unicorns. CoinDCX, which was valued at $1.1 billion, and CoinSwitch, which was valued recently. That was just this November. When it was valued at 2.1 billion USD. So two unicorns in centralized crypto companies space. If you look at tokenized protocols, again, it was a fantastic year for Bitcoin. We saw Bitcoin increasing its in its value from 600 billion USD to about 860 billion USD market cap, which is kind of about 43% up from what it was on 1st Jan 2021. Right. So the pricing the for a Bitcoin is going around 40K, and we believe it's going to be hovering around the same benchmark, give or take 15%. And if you look at altcoins, it seemed to be a great year, and especially because Ethereum gained a dominance of 19%, in the market away from Bitcoin, right? So it's a very promising metric, because it speaks to the growing interest of people in the industry and looking for alternatives where cryptocurrencies can be utilized for other things as well, right? If you look at the top three cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, and Binance, established their marks or retained, in the case of Bitcoin and Ethereum. If you look at Indian networks, Polygon, WazirX, and Persistence are three of the top networks, with Polygon valued significantly above the others at 15 billion market cap. WazirX valued at 331 million market cap, and Persistence at 315 million market cap. Right, Persistence was the youngest, in the top three, and is a very promising initiative as well. Again, you've spoken already, or you've learned already a tad bit from Tushar, who's the CEO of Persistence. Right, but again, we continue to sort of elevate the level by bringing in promising folks, and with that note, I would like to bring in our guest for today. Rishabh runs an amazing cryptocurrency initiative. It's I would let him take the mantle to describe it in the rest of the conversation, but I would say a very promising exchange is arising, and they've been on the block for a while, but there's the new direction, the evolved direction is even more promising than where it was. So Rishabh, welcome to the Fireside Chat series. How are you Thank you doing very much. today? Thank you very much, Akshay, for this warm welcome. And hello, Blockchain India community, Shiftal community, and my friends and family who are watching me live now. And for most of you people know, I'm Chief Executive Officer, Founder, and CEO at Shiftal Exchange. Shiftal is a P2P cryptocurrency exchange, and finally has found its way in India, one of India's top five cryptocurrency exchanges that's going out live now.
And the recent attraction that we have got, that is because of our native cryptocurrency that we have launched, that is Shiftal coin. So today I'll not just be talking about Shiftal in general, I'll be talking about cryptocurrency. And every time I talk to the people from Blockchain India, I get very excited. I remember, Akshay, I had a discussion with you 2 years ago when Shiftal was just a baby. We were just 4 people working for Shiftal, and I got on a call with you. You actually helped us out very well without even talking about any other monetary benefits to Blockchain India. You just talked to me, helped us out, introduced us to the community that a new exchange is out live, and that really did help us. And I actually thought that one day when Shifter will be something in the market, you will be the first one I'll be having a conversation with. So here am I. Howdy, Akshay. Thank you so much, Rishabh. I think, so when the goal is clear, at putting India at the top of this new industry, I think it lies on us and everybody in the ecosystem to support the outshiners. And so the idea was always to support you and help Shift will become an outlier in that sense. So pleasure has and will continue to be mine when I converse with you and rest of the team. Right. Just quickly delving in, I think I know a lot about Shiftal, but I guess this is more about our audience trying to understand broadly exchanges as well as your journey and then what prompted you to start it. Because in a lot of ways, think of this as an inspiration for others who want to start into the Web3 industry, right? So quickly, understanding from you, where do you come from? What's your background like? Mhm. Okay. No, definitely. That was really nice of you. And I'll just start with a small introduction about Shiftal. So Shiftal is basically a P2P cryptocurrency exchange. It is Hmm. a peer-to-peer exchange which we launched in 2019. 2019 was the time when the development of the Shiftal exchange started. So basically, I'll talk about crypto exchange. Okay, some people are asking me to talk in Hindi, so I'll just switch to Hindi for a time. But Absolutely. Shiftal एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, एंड यूजुअली एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर सभी यूजर्स जाकर अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सेल कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को परचेज कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, उस क्रिप्टो करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं, उसी अपने बैंक अकाउंट में आईएनआर को और एनी फिएट करेंसी को दे कैन ऐड इनटू दैट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. सो एक्सचेंज इज बेसिकली अ मीडियम to trade cryptocurrencies. So in Hmm. India, you might be familiar about crypto exchanges where guys trade, and Shiftal is one of India's top P2P cryptocurrency exchange when we talk about it. Uh, just talking about how the company started in 2019, I did my post graduation. My post graduation got completed, and we started with this project Shiftal. So at that time, it was very much inspired by local bitcoins. That was a P2P exchange that was ruling the market at that point, and I personally used to trade on that exchange. So from that, I just went ahead and searched out the gaps that are there in the crypto trading. As a user interface, user experience, I checked what are the issues that I am facing right now and how can we solve these issues. So keeping that in mind, we launched our own cryptocurrency exchange. Development got started. We got registered. So Shiftal is an MNC basically. Basically, it's a multinational company. It is registered and licensed in Estonia, Hmm. Lithuania, United Kingdom, United States, and India. So these are 5 nations in which the company is registered now. It initially started from Estonia, but later on we just went ahead and did grow. And recently we got registered in India as well. So no one can buy directly through INR their cryptocurrencies in Hmm. a peer-to-peer exchange. In peer-to-peer exchange, what happens is that two people can directly buy and sell cryptocurrencies to and fro from each other without the involvement of any third party. We just act Hmm. as a cryptocurrency mediator services, escrow services. So suppose Hmm. you, Akshay, are a person who wants to buy cryptocurrency. So you will Hmm. just go there on shiftal.com and you will select a sell advertisement. Suppose someone, there's name by Manav, he's coming on Hmm. board and he wants to sell his coin. So वो एक advertisement डालेंगे, you click on that advertisement, you just put in the amount that you wish to buy for, then you can directly chat with that person. And after Hmm. chatting, after paying money to the seller, seller has to click on release coins for you to get the coins. And Hmm. us as cryptocurrency mediator services, we keep the coins in escrow.
And once Mhm. we have a confirmation that the buyer has paid properly and the seller has got the payment, we release the funds to the buyer. So this is how peer-to-peer model works. And also, just to tell people, spot exchange is coming very soon. Shiftal की Mhm. खुद spot exchange बहुत जल्दी आ रही है मार्केट में. And Mhm. जैसे ही spot exchange आती है, सभी लोग SFL को भी और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को भी उसी तरह ट्रेड कर पाएंगे, जैसे लोग बाइनेंस पर करते हैं, जैसे लोग वजीरेक्स पर करते हैं, जैसे और हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंजेस पे लोग ट्रेड करते हैं स्पॉट में, वैसे ही लोग कर पाएंगे. और इसी के साथ शिफ्टल विल आल्सो हैव लिंक ऑफ P2P exchange embedded into the spot exchange, so that as a layman, you can just come on the exchange without the fear of any third party. आप P2P क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से पहले आप बिटकॉइन, इथेरियम, एसएफएल कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं, एंड उसके बाद you guys can trade it on the spot exchange. So this is basically the whole idea behind the project. It is an ecosystem, and I'll talk about it much further once you ask me what all is going on with Shifter and how it actually gained so much attraction in the last 4 to 5 months. Great. I love the uniqueness to it. I do remember that point very vividly when local Bitcoin was kind of the go-to, platform for us to, trade cryptocurrencies. The first wave of crypto exchanges had probably just come about when local Bitcoin was still the name, right? And specifically during the time the ban was there, I think everybody used to look towards local Bitcoins to at least, find some way of getting hands onto Bitcoins. And then, uh, 2020 was a great year because the ban was reverted, and I think the exchanges took off pretty much as everything else in the industry. So yeah, I mean, great inspiration point for you. But just to relate to you more, Rishabh, how did you, I mean, think of becoming a trader? What was the point that sort of brought you into the ecosystem of local Bitcoins, or rather the whole cryptocurrency as an industry? Yes. So basically, I belong to an officer family. I was born Hmm. into a family of officers. My father is a crime officer, grandfather is an estate officer, and I've been educated in a military school. So, जहाँ Wow. पर मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पर I was in NCC. I was an NCC cadet at that time, and मेरी life का एक चीज set थी कि all of my family is in the armed forces, and I was Hmm. chosen one to again go into the armed forces. And मेरा complete set भी ऐसा ही था. But when I joined college, I Hmm. started my college in Bachelor of Computer Applications (BCA). So when I started that degree, now I was introduced to the world of trading. Hmm. My first Bitcoin, I purchased my first Bitcoin through Zeppay. There was an exchange, Hmm. Indian exchange. वहाँ पर उस time एक ही exchange होती थी, and I purchased my first Bitcoin. I was sitting with my father, and I told him there's something new. And he said me क्या चीज है? तो I showed him कि this is Bitcoin. It cost 20,000 rupees at that time. So I bought my Hmm. first Bitcoin at 20,000. It went to 45,000. I sold that. And as the 25,000 आ गए at this age, okay, now I will go and have fun with it. And उसके बाद I saw, okay, Zeppe पे होता है. Then I went to local Bitcoins. तो मैंने Hmm. देखा कि arbitrage कर सकते हो आप वहाँ पर. You can Hmm. actually buy uh, and sell at the same time to different Hmm. buyers and sellers and earn money through that. You can do that Uh-huh. locally. You can do that online. So I Hmm. was introduced to the model of a P2P exchange, spot Hmm. exchange, Zeppay, P2P exchange, local bitcoins. मैंने कहा यार ये Uh-huh. बढ़िया है. I can easily earn money from this sector. And cryptocurrencies in general, उस time पर coins बहुत कम होते थे. There was not much coins at that time. And Hmm. I started investing in Bitcoin, Ethereum, started gaining money. जो मेरे आसपास के लोग होते थे, I used to took money from them. उनको ज़्यादा करके भी मैं दे देता था. अपना profit नहीं रखता था, just for the family. मम्मा से पैसे लिए, Hmm. पापा से पैसे लिए. I used to take money from my sister and used to take money from my friends, from my relatives, and उनको मैं बढ़ा के देता था. And वो कहते थे यार कि ये he's very smart guy. And what they didn't know about is the concept of the cryptocurrencies and where I'm getting this money from. उस टाइम पर Uh-huh. मैंने सोचा कि एक बार मुझे लॉस हुआ. I again bought Bitcoin at 50,000 rupees and it went down to 40. So I sold at Hmm. 40 and again it went to 60. So I thought कि how to actually earn. Then I thought कि जिस exchange से मैं ले रहा हूँ, जिस exchange पर मैं बेच रहा हूँ, वहाँ उससे लॉस नहीं हो रहा. I'm paying fees Hmm. when I'm buying. Paying the fees when I'm selling. So as a trader, Hmm. if I win, exchange wins. If I lose, exchange still wins. So that Hmm. is what
actually brought me into this world. I thought once I pursue my post graduation, I'll be opening up a cryptocurrency exchange. So it was set at that time. 3 years I Mhm. took it. I was part of NGOs, helping people around always. And once I completed my graduation, I went to the United Kingdom, University of Birmingham. I went to study there, and Mhm. जहाँ मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी MS in International Business and Blockchain Technology. So while I was Mhm. learning that, I was set कि once my degree is completed, I'll just go back to India and start my venture. Found my partner. He's based out in United States. He's Mhm. a British citizen. And he's based out in United States, but he's an Indian, and he's a girl, by the way. So yeah, so with him, I started the company, and there were tremendous roadblocks, which I'll talk further about. But the main idea behind it was that, and secondly, always wanted to do something big for myself. Mhm. I had few businesses that I could have gotten into, but still, I chose the one that is actually solving people's problems, a basically user-oriented product I wanted to get into. And since I was a crypto expert, I was called a crypto expert at that time, Mhm. and so I thought कि let's just start with it and let's see. तो जब मैंने शिफ्टल शुरू किया, the initial moment, I did not have a roadmap. I did not pin anything down. Usually people say Mhm. entrepreneurs have a full idea what they are going to do, but I did not had any idea what I was going to do. I just knew कि भाई okay, cryptocurrency exchange होती है. I just googled how to open a cryptocurrency exchange. I got a few contacts of development companies. I had no idea, and my partner, he invested in me, not in the product. He said कि uh, I'll invest into you and let's see where it takes me. I told him, भाई पैसा बना तो बहुत बनेगा, नहीं बना तो नहीं बनेगा. And went ahead and started with it, and see where it is today. And I really look back and see कि भाई took that good decision. And now when I'm looking at it, I really wanted to surpass all the cryptocurrency exchanges that are there in India. We are already on the road towards it. Bollywood celebrities, TV series Mhm. celebrities, everyone is promoting Shiftal at the moment. Due to the Mhm. airdrop, Shiftal's community has won 40,000 plus on Telegram, and it's really working well. So yes, I belong to a officer family, but once I was मेरे को पैसे का एक हो गया था कि क्रिप्टो करेंसी ओके इन्वेस्ट करो, एंड इट वाज जस्ट समथिंग on another level. I was a full-time trader. Even when I was in Mhm. my post-graduation degree, I was a Mhm. full-time trader. उस time पर Bitcoin का fork हुआ था. I remember Bitcoin gold बना था. And for 3 days straight, I was in United Kingdom, out in the streets. I was just sitting besides, and I was just trading on it. I Mhm. had a Bitcoin. I converted it into 10 Bitcoins just in period of three Mhm. days. And after that, I lost it all. I lost it all in leverage trading. So Mhm. that is also something that happened. But I guess this field is too mesmerizing. Interesting, interesting. And I'll again touch upon some of these aspects. Community is very important. I think the intention is right, and kind of also I'll delve into some characteristics of it, at least from your perspective or how you see it. But quick question. I realized that your family, is has a very, very humble, or a very, I would say, kind of literally serving the nation, was kind the more like the context of the family, right? How did they react when you shared the idea of starting in the crypto world? So was it a little bit, were they a little cautious of what you were doing? How did they basically take the news? Yes, so as I told you, I studied in a military school, and Mm-hmm. जिस हिसाब से मेरे फादर ने मेरी अपब्रिंगिंग की है, इट वाज Mm-hmm. क्वाइट श्योर दैट लोग मुझे कहते थे ठीक है अपने फादर की तरह बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, ठीक है, अच्छा पुलिस में जाएगा बेटा, आर्मी में जाएगा, कहाँ जाएगा? एंड मैं भी ऐसे Mm-hmm. बोल देता था, आई वांटेड टू गो इनटू स्पेशल टास्क फोर्स, मे बी आई डू दैट. एंड Mm-hmm. एवरीवन न्यू, दूर दूर तक भी इन माय फैमिली, पीपल इन जुडिशरी, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, दूर दूर तक no one has touched business in my family. Mm-hmm. So they were like कि ठीक है देखते हैं where he will go. And once I Mm-hmm. started cryptocurrency trading ना, पहली बार जब मैंने Mm-hmm. बिटकॉइन लेके बेचा, my father was happy. At the same time, he was a bit shy कि यार okay, he's turning it into a business. And still उस time पर ऐसा होता था, it was being compared to the stock market. So Yeah. people लोगों का ये thinking होती थी कि यार ये तो शेयर का काम हो गया है. एंड काफी Mm-hmm. दूर के रिलेटिव्स मुझे बोलते थे, अच्छा तुमने शेयर ट्रेडिंग शुरू कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया. एंड मैं सिर्फ ये बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि people will be actually coming into cryptocurrency, people will be actually knowing what it is, and then people will be coming and asking me. Now you Mm-hmm. go into the market,
you आप 10 लोगों को पकड़ो, उनमें से 8 लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, एंड आई गेट Exactly. हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स, भाई बता दो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, एंड आई वाज लाइक कि उस टाइम पर व्हेन आई लुक बैक एट इट, सो इट लुक्स लाइक कि यस, आई चोज द राइट फील्ड, बिकॉज उस टाइम भी मुझे लगता था कि दिस इज गोना बी समथिंग बिग, एंड राइट नाउ एट द जिस स्केल पर है क्रिप्टो करेंसी, आई गेस इट्स जस्ट 10% ऑफ इट्स पोटेंशियल. एंड कमिंग बैक टू द Absolutely. टॉपिक, my family, my parents, my grandparents, they took it very well. They supported me throughout my journey. When I started business, they told me, "ठीक है, तुम business करो, कोई बात नहीं, take your time, whatever time it takes, you just go ahead and do it. But please make sure that your future is secure with it, because you belong to a service family, you don't belong to a business family. There's no hard cash lying around under the bed that you can just take and spend it. So you, if you can select your what you want to do, if you want to go in armed forces, if you want to do service, then also you are happy to do. If you're going to do business, then you need to know that you need to do it properly. Mhm. And one of my relatives has joined in. Hi. So it really looks good when more people join in the chat. My loved ones, You've parents, you have family. quite a you have quite a support network, I can see, within the family. So it's not easy to get away so easily by saying that you're getting into the crypto industry, and with only a few words of caution, I would say, Wherever right? I am, that is because of my family. My parents, my Uh-huh. grandparents, they blatantly supported me with it, with everything. They told me, take money, take whatever you want. And I started it from scratch, completely Mm. from scratch. जितने भी पैसे मेरे पास थे, बढ़ाता 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 बढ़ाता, then एक कितने पैसे हो गए कि I just put it all into Shiftal and let it grow. But really, my family supported me, and where I'm today, that's because of my family, of the help that my family gave me. Friends, Huh. few of my friends, very supportive, and Mhm. this was the support. So yes, I got support, and I really Very thank cool, very cool. No, so now that we can relate to you better, Rishabh, I think ये सही time होगा we delve into the USP of Shiftal. क्या yes, Shiftal के vision में ऐसा क्या है जो set apart करता है users के experience को cryptocurrency industry के right at the interfacing point को, क्योंकि exchanges को बोलते हैं कि वो gateway है Web3 world का, right? Exchanges are supposed to be that gateway. And so, how do you envision, Shiftal, being different from others? What is its USP? yes. So basically, Akshay, when you say exchanges are gateway to Web3, that is, I Mm-hmm. agree with that point exactly, and I think exchanges should work in that way as well. I see most of the Absolutely. exchanges, 80% of it are not working the way they should. It's just Mm-hmm. that blatantly they are promoting the coins which they should not promote. Sorry to say it Mm-hmm. out loud, but I don't really like people mocking coins, people who even promote coins, the coins that I Mm-hmm. really have don't value, no value at all. And these Mm-hmm. exchanges, they list such products on their exchange. And somewhere, if people are not trusting cryptocurrency, now this is because of that. So exchange, as an exchange, it is a responsibility of the owners, of the founders, of the team, that they do right for the industry. Because हम एक ऐसे टाइम पे हैं, इस टाइम पर जितना भी क्रिप्टो करेंसी फेमस हो रहा है, that is Mm-hmm. all depending on one thing, the exchanges Mm-hmm. and exchanges in all. So talking about the USPs of Shiftal, Shiftal is just a P2P cryptocurrency exchange, and we are just about to open up a spot exchange. फिलहाल में, in the P2P cryptocurrency segment, the problems that people face, there are very I have very, I mean, examples of exchanges, Mm-hmm. PassiveX, CoinEasyX, and all of that. Mm-hmm. As a user, also, what I experience is that if person is sending out a support request that is not being answered to even after 48 hours, even after 72 hours, this is not how the case should be. So, talking about the USPs of Shiftal, Shiftal has launched its own callback request feature. This is first in kind that has been launched in Mm-hmm. any cryptocurrency exchange in India. So, while you're trading with the trader, that if you're selling your coins, if you're buying your coins, and if you're already in the chat screen, if you're in the trade screen, there will be an Mm-hmm. option to open up a callback request. So if a person clicks on that, that takes them to two mechanisms. One is automatic and one is manual. So they can actually put in their mobile number and request for a callback. And usually the callback is completed in the next 10 to 15 minutes. So this is a Mm-hmm. breakthrough in this whole business, because if an exchange is a mediator now, there are a lot of frauds going on with people. Buyers say that they have made the payment, but actually they give a fake screenshot out to
to the seller. Seller Absolutely. says कि मुझे तो अभी तक पैसे आए नहीं है, ओके बंदे ने स्क्रीनशॉट दिया तो क्या हुआ, आ जाए मुझे पैसे. They put in हाँ. a support request, put in a dispute to that trade, and the exchange doesn't reply. But if there is callback request, if there are intelligent people sitting behind, there will be most scope of frauds would be actually eliminated from this segment, which will actually help people to trust more on cryptocurrencies. So बिल्कुल. for USPs, we have connected a Zendesk, we have connected an automatic chat environment. People don't have to create an email support ticket. They can just directly chat with admin, a personal account manager at all times. They can put in a support request. Immediately they are given with a chat screen and there they can chat with Mm-hmm. the admin. They can create Mm-hmm. callback requests. And with it, we are thinking of launching a bidding system, one in all bidding system that has not been launched by any exchange yet. More details will be coming out soon, but in that, basically, it'll be like a system in eBay where you just bid on cryptocurrencies. If you have a cryptocurrency advertisement going on, people can bid on that. अच्छा मुझे इतने में लेना है, अच्छा मुझे इतने में लेना है. This is something that is very unique, so that we plan to launch. But as an exchange, we have always been striving to give the best user experience so that people are protected from fraud, people are Mm-hmm. protected from being scammed, and people are getting the best user experience that Mm-hmm. they deserve actually in this market. So that is how we are acquiring users. We have crossed 2 lakh actual users on the platform, and Mm-hmm. this is something which has happened due to the support, to the service, to the community managers, with everyone's help in the team. And this is how we are a bit different from the native cryptocurrency exchanges. And in the same way, I promise everyone who is using Shiftal that once a spot exchange launches, these special features will be embedded into spot exchange as well. And it will be one in all exchange where people, where users can actually interact with the exchange, not just wait for an automated email reply. एब्सोल्युटली। तो मतलब फोकस जो यहाँ पे है वो है यूजर एक्सपीरियंस पे, यूजर्स की प्रॉब्लम को यू नो विद इन स्मॉल टाइम पीरियड सॉल्व करने में, राइट? सो द फोकस इज यूजर्स फर्स्ट. द आइडिया इज टू मेक श्योर उनका एक्सपीरियंस विल थ्रू आउट द एक्सचेंज प्रोसेस और थ्रू आउट द हैंडशेक प्रोसेस अच्छा रहे. एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट अ गुड विजन इन इटसेल्फ, बिकॉज़ हमने सारे एक्सचेंजेस में एक चीज कॉमन देखी है, चाहे बाहर की हो चाहे इंडिया की हो. एक चीज कॉमन देखी है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं एक चूक हुई है यूजर्स को उनकी प्रॉब्लम्स को रियल टाइम में सॉल्व करने में. सो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ डिफरेंशिएटर इन इटसेल्फ. अगर किसी प्रोडक्ट की सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं कि उनके यूजर्स कितने अच्छे फील कर रहे हैं, वो यूजर्स कितने खुश हैं उस प्रोडक्ट से. तो अगर that is the main outlook of the exchange. It itself is one a Herculean task, but a very noble intention to go at the problem with, right? So kudos to you, Rishabh, for that. I think from our audience हमें बहुत सारे request, and this is Rishabh for the first time I've seen in our fireside chat series that हिंदी पे इतना जोर देने के लिए बोला जा रहा है. So अभी हम दोनों कोशिश करेंगे थोड़ा सा हिंदी में भी टच अपॉन करें, but Yes. for all the audience we'll try to cover everything in both languages, trying to be cognizant of the fact that there is an audience from all across the country. So नॉट एवरीबडी इज हिंदी स्पीकिंग, सब हिंदी भाषा नहीं बोलते, बट हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही में हम कवर कर पाए कंटेंट को. Yes. राइट. So Rishabh, that request sort of being highlighted again, and I know you already highlighted it. We're just talking about the user experience. So this is a user experience. Users are saying हिंदी में बोलो तो ठीक है, हिंदी में बोलना पड़ेगा. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. सो क्विकली अगर हम देखें कि एक्सचेंज की अगर हम अप्रोच है, तो क्या हम इसको एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी की तरह देख रहे हैं, या हम डिसेंट्रलाइज्ड टोकन एनवायरनमेंट की तरह देख रहे हैं, या फिर जो तीसरा एस्पेक्ट है जो बाइनेंस ने चैंपियन किया है, एक हाइब्रिड, एक एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी जो गति देती है एग्जीक्यूशन की, बट एट द सेम टाइम टोकन एनवायरनमेंट जो कम्युनिटी को स्टिल इंसेंटिवाइज करता है टोकन की प्राइस एप्रिसिएशन पे. उस दोनों दोनों का हाइब्रिड अप्रोच ले रहे हैं. वो आप कैसे देख रहे हैं इस विजन को? एक्चुअली इस विजन के बारे में मैंने सोचा था 1 साल पहले कि हम्म. शिफ्टल की P2P एक्सचेंज इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज. ये एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है. एंड उस टाइम पर हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को ओपन करो.
तो मेरा ये Mhm. प्लान था कि वी विल हैव डिफरेंट डोमेन्स एंड वी ओपन आवर ओन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आल्सो। बट Mhm. नाउ व्हेन आई Mhm. लुक इनटू इट ना, जो बाइनेंस ने किया दैट इज एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग आई मस्ट से, कि जो Mhm. उनका एक प्रोग्राम है हाइब्रिड एक्सचेंज का, Mhm. दैट एक्चुअली मेक सेंस, बिकॉज यूजर्स जो है उनके पास सब चीजों का ऑप्शन होना चाहिए। यूजर के पास एक ही एक्सचेंज में ऑप्शन होना चाहिए स्क्रैच से खरीदने का। आप बाइनेंस Mhm. पे जाओगे, आप अपने बैंक अकाउंट से नहीं खरीद सकते एकदम। यू कैन गो ऑन P2P, बट यू कैन नॉट, Mhm. अब पहले आप एकदम लेने जा रहे हो, आप नहीं ले सकते। देयर शुड बी एन ऑप्शन, यू लॉग इन इनटू द वेबसाइट, आप इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके इमीडिएटली कोई भी क्रिप्टो परचेज कर सको। उसी क्रिप्टो से अगर आपका मन है कि स्पॉट ट्रेडिंग करने का, आप वो कर सको। आईडीओ में इन्वेस्ट करने का मन है, आप वो कर सको। उसी को आप ट्रांसफर करके डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में, जस्ट लाइक पैनकेक स्वैप एंड ऑल ऑफ दी स्टफ, वहां पर आप इस चीज को न्यू पेनी, जिसको हम पेटी टोकन्स कहते हैं, उनके अंदर आप ट्रेड करना चाहो, आप वो कर सकते हो। सो एक हाइब्रिड एक्सचेंज इज द एक्चुअल सॉल्यूशन टू द मार्केट। एंड इसी के Mhm. साथ एक बहुत बड़ी विजन शिफ्टल की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस पब्लिकली। हमारा क्या इकोसिस्टम का विजन है, वो ये है Mhm. कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें टॉप टू बॉटम सारी की सारा बैंकिंग सॉल्यूशन हो। बेसिकली Mhm. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजिंग द वर्ल्ड। दैट इज हाँ, बेसिकली a tagline that comes around these kind of businesses, that हाँ, हम पूरे इन वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। हम, Mhm. आप अभी भी किसी बैंक में जाओ, 2 करोड़ है आपके पास बैंक में, कल को बैंक फेल हो गए, यू विल ओनली गेट 5 लाख रुपीज एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हाँ, यू, आपके पैसे हैं, बहुत लिमिटेड पैसे आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, लिमिटेड पैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो, यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीजों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी से इंट्रोड्यूस करवाया गया है वर्ल्ड में। सो क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली बिल्कुल। डिसेंट्रलाइजिंग द होल वर्ल्ड। तो हमारा विजन ये है कि वी क्रिएट एन इकोसिस्टम। इन द इकोसिस्टम वी विल हैव स्पॉट एक्सचेंज, P2P Mhm. exchange, decentralized exchange. Along with it, we are planning of opening up an EMI. EMI is an Mhm. electronic money institution, and with opening up an electronic money institutions, we will be giving Shiftal users their own bank account numbers, their own IBAN numbers. So IBAN number is a bank account number in Europe. So Uh-huh. we will give users with an IBAN number. They will get debit cards of Shiftal to use. Right now, India is facing a very big problem. People don't have Mhm. crypto debit cards. If they want to spend their crypto through a debit card, they cannot do that. You can actually order a card through world's other exchanges. किसी आप इधर उधर से कहीं से कर सकते हो उस चीज को order, but there's very less knowledge about it. If 100 people are exposed to the world of cryptocurrency, only one person would know that there is actually a debit card which exists where you can actually cash out your crypto. So we are planning to make an environment where we have a P2P exchange, हमारी spot exchange है, हमारी futures margin trading exchange है, decentralized exchange है, उसके साथ एक हम लोगों को EMI दे रहे हैं कि ठीक है, हम आपको आपका खुद का बैंक अकाउंट दे रहे हैं। आप अभी सोचते हो कि क्या हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के क्रिप्टो लें, बाद में हम आपको वही एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हम ही से एक बैंकिंग सर्विस भी लो, ताकि Mhm. योर मनी कैन बी सिक्योर इन दैट EMI, यू कैन सिक्योरली इन्वेस्ट, यू कैन सिक्योरली विड्रॉ, एंड आफ्टर दैट यू कैन Mhm. सिक्योरली स्पेंड इट इन द शॉप्स। आपको शॉप में जाना है, मॉल में जाना है, एक स्वेटशर्ट खरीदनी है, यू कैन एक्चुअली स्वाइप अप योर कार्ड एंड एक्चुअली गेट दैट प्रोडक्ट। एंड दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड शिफ्टल कॉइन ऑल्सो। शिफ्टल कॉइन लोग पूछते हैं क्यों लॉन्च किया, दिस इज अ नेटिव कॉइन ऑफ शिफ्टल exchange. It will be you when people talk about use cases of this coin, one of the हाँ. best use case of this is we will enable this to order debit, and Mhm. people will actually use SFL to pay the relevant fees on it. So this is the whole Absolutely. idea behind the product, that just because, and usually what products do, प्रोडक्ट्स पहले अपना कॉइन निकालते हैं, पैसे कमाते हैं, बाद में प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। वी लॉन्च्ड आवर Mhm. प्रोडक्ट 2 years prior to launching the coin. Now we have launched the coin after 2 years. If people want to see, they can go on Shiftal Instagram and they can view the first post that was went live. That was live in 2019. And Mhm. अब हमने जाके अपना coin use किया. So we actually worked on the product, and now then we launched the project, the coin बिल्कुल, basically. So we are बिल्कुल. making an ecosystem where all the services can be combined, and it will be a one-stop solution for everything. That too from scratch. People have missed out on opportunities, and SFL is actually an opportunity which people might not wish to miss out to. एब्सोल्युटली नहीं, मतलब अगर आप देखेंगे, जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, मेरे को आई कैन ऑलरेडी फील, मेरे को अब महसूस हो रहा है कि कितनी एक्साइटमेंट है कम्युनिटी में। शिफ्टल की कम्युनिटी खुद ब खुद इतनी स्ट्रांग है, एंड वो दिख रहा है अभी अभी से ही। एंड आई थिंक
मोस्ट ऑफ इट गोज टू जो आपकी शुरू से भूमिका थी कि एक प्रोडक्ट की डायरेक्शन शुड बी रिलेटेबल टू पीपल। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इस पिछले 5 साल की एक जो लर्निंग है सबकी, वो है कि आप बैंक में आपने पैसे रखे, बट वो ना वो महसूस ही नहीं होता कि वो आपके पैसे हैं। ऐसा लगता है कि किसी और के पैसे हैं, एंड आपको परमिशन लेनी है उसको यूज करने के लिए, उसके उसके राइट्स लेने के लिए, और कल को अगर खो भी जाते हैं तो वो देयर इज नोबडी लायबल, किसी किसी के ऊपर मजबूरी नहीं है कि आपके पैसे आपको वापस किए जाएं, राइट। एंड आई थिंक वो जो पूरी पल्स है लोगों की, वो आपने बहुत अच्छे से समझी है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई द कम्युनिटी इज हैप्पी। इसीलिए कम्युनिटी खुश है आपकी नई डायरेक्शन से, पहले प्रोडक्ट फिर टोकन, एंड देन यू नो I think the path only starts, right? We will get into the more features, Rishabh, but मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि the airdrop is live. आपने there are 2 or 3 kind of approaches that people have used, but I think with your particular thing, I think the whole aspect becomes more like एक enough of a window आपने दी है सबको इन्वॉल्व होने के लिए, राइट, अपने एयर ड्रॉप से। तो क्या आप उस पे थोड़ी सी टिप्पणी दे सकते हैं? यस, यस, यस। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कम्युनिटी बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर गौर करे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में, हमारी इंस्टाग्राम हम्म। पे, मेरे पर्सनल हम्म। इंस्टाग्राम हैंडल पर बहुत लोग कमेंट हम्म। कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है? क्या शिफ्टल हमको सच में पैसा देगा? सबसे पहले हम्म। मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट पैसा, दिस इज़ कॉइन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर इन क्रिप्टो करेंसी। अगर आप शिफ्टल हम्म। के ऊपर साइन अप कर रहे हो, आपको 50 शिफ्टल कॉइन फ्री के मिल रहे हैं, एंड यू हैव एक्चुअली अर्न्ड दैट इफ यू आर हैव कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी को भी रेफर करते हो 3 लेवल के रेफरल प्रोग्राम पर, तो आपको 20, 15 और 10 शिफ्टल कॉइन फ्री मिलते हैं 3 लेवल्स पर। तो हम्म। दिस इज द एसएफएल दैट यू हैव एक्चुअली गेन, दैट यू अर्न। हैव एक्चुअली वन। लोग ये हम्म। पूछ रहे हैं कि क्या ये कंपनी विड्रॉ देगा कि नहीं, मुझे तो स्कैम लगता है। अरे भाई, आप लोगों को स्कैम क्यों लग रहा है? ये आप लोगों को स्कैम इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर अर्निंग सो मेनी कॉइन्स। लोग देख रहे हैं, ठीक है, मैंने 10,000 शिफ्टल कॉइन कमा लिए, जिसकी वैल्यू 10,000 शिफ्टल कॉइन, 20,000 शिफ्टल कॉइन, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की वैल्यू के हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हमने ऐसे पैसे एक्चुअली में अर्न किए हैं। व्हाट आई हम्म। वांट टू टेल यू गाइस इज दैट कि आप लोग अगर फेक रेफरल्स कर रहे हो हमारी वेबसाइट पे, देयर आर अ लॉट ऑफ हम्म। यूजर्स हु आर डूइंग फेक रेफरल्स। अपनी एक हम्म। ईमेल आईडी बनाई, उसके बाद सेम नाम की 10 ईमेल आईडीज बना के अपने आप को रेफर कर दिया और कॉइंस कमा लिए। दिस इज हम्म। नॉट हाउ इट शुड बी गाइस। प्लीज डोंट एक्सप्लॉइट द प्रोजेक्ट। आपको सबको एसएफएल जो है, सबके एसएफएल्स अनलॉक होंगे, सबके एसएफएल अनलॉक होंगे, बट हम्म। आई वांट टू टेल पब्लिकली दैट हाउ इट विल बी अनलॉक्ड। हम्म। ये जो आपके सबके कॉइन्स हैं, दिस विल बी स्टार्ट अनलॉकिंग बाय एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ के हम्म। एंड में ये कॉइन अनलॉक होने स्टार्ट होंगे, एंड उस टाइम पे हमें केवाईसी मैकेनिज्म रखेंगे। केवाईसी इज ऑलरेडी इन प्लेस, बट उस टाइम पर एक केवाईसी मैकेनिज्म रखा जाएगा कि जिस जिस अकाउंट की भी केवाईसी कंप्लीटेड है, सिर्फ हम्म। उन लोगों को ही एसएफएल अनलॉक होकर मिलेंगे। एंड उनके बिल्कुल। नीचे जितने भी रेफर हैं, आप हाउडी हम्म। अक्षय हैं, आपने 10,000 लोगों को रेफर कर दिया और 1 लाख शिफ्टल कॉइन कमा लिए। दोज हम्म। विल बी लॉक्ड until वो 1 लाख लोग केवाईसी नहीं कर लेते, because बिल्कुल। we need to place in a mechanism unless we cannot control the price of the coin, unless this हम्म। will be another shit coin. So how बिल्कुल। to actually make it a native coin exchange, and इसके प्राइस को मेंटेन करने के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को, this is not an MLM coin, this is a genuine हम्म। company, this is a genuine coin. So just to maintain the price of it and to maintain uh, true behavior of what is being happening, what we will do is आप जितने भी रेफर्स है सबको केवाईसी करनी पड़ेगी। जो जो केवाईसी करेगा उनके कॉइन्स ऊपर क्रेडिट होते रहेंगे। वंस द कॉइन्स आर क्रेडिटेड, these will be under a lock-in period, and that lock-in period will be decided and will be displayed on the website in April. Lock-in period में हम्म। ऐसा होगा, सपोज करो फॉर एन एग्जांपल इट इज अंडर अ 2 years लॉक-इन पीरियड, तो डेली हम अनलॉकिंग करेंगे उसकी, जैसे वजीर एक्स ने किया था, जैसे काफी क्रिप्टो एक्सचेंजेस करती हैं। अगर आपके पास 1 लाख फ्री शिफ्टल कॉइन्स हैं, दैट डजंट मीन कि हम्म। हमको 1 लाख शिफ्टल कॉइन्स विल बी अवेलेबल टू विड्रॉ। दैट विल बी अंडर अ स्ट्रिक्ट लॉक-इन। डेली थोड़े थोड़े अनलॉक होंगे व्हिच पीपल कैन ट्रेड ऑन शिफ्टल एक्सचेंज एंड ऑन अदर एक्सचेंजेस। सो टू बिल्कुल। आंसर क्वेश्चन वंस इन फॉर ऑल, सारे के सारे कॉइन्स मिलेंगे यूजर्स को, सारे के सारे हम्म। कॉइन्स जो अनलॉक होंगे, बट इट विल बी अंडर अ पीरियोडिक अनलॉकिंग। नॉट हम्म। पीपल, यूजुअली क्रिप्टो करेंसी में कैसा होता है, यूजर्स को होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा मिले, बट टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, केवाईसी विल बी मेड मैंडेटरी एंड द कॉइन्स विल बी अंडर अ लॉक-इन पीरियड विद अ डेली हम्म। अनलॉकिंग। अप्रैल में जैसे ही लॉन्च होता है हमारा एक्चुअल में कॉइन आफ्टर पब्लिक सेल, पहले दिन से ही अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम यूजर्स को बोल रहे हैं कि आपको इतना टाइम वेट करना पड़ेगा अनलॉकिंग के लिए, पहले ही अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी।
but it will be हम्म, periodic. बिल्कुल, बिल्कुल। और दिस इज अ गुड अप्रोच। आपने टोकन इकोनॉमिक्स पे बहुत ध्यान दिया है। एक तरीके से कैसे अर्न कर सकते हैं उस पे भी ध्यान दिया है। अब थोड़ा सा आप बताइए, कंट्रीब्यूट करने की बात, यूजर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली अर्न करने का एस्पेक्ट उसमें भी आएगा, बट टोकन सेल के बारे में थोड़ा सा हमें डायरेक्शन दीजिए। G. So token sale is basically taking place on shiftalcoin.com. So हम्म, shiftalcoin.com is the IEO platform, initial exchange offering platform, जहां पर हम्म, shiftal coin सेल हो रहा है। तो वहां पर यूजर जाकर रजिस्टर करके किसी भी चार मेथड से shiftal coin को खरीद सकता है। Either they can transfer BTC, either they can transfer USDT, either they can transfer Tron, either they can transfer Ethereum. ये सारे हम्म, कॉइन्स को लोग ट्रांसफर कर कर अपना शिफ्टल कॉइन को परचेज कर सकते हैं। ये जो कॉइन्स परचेज करते हैं किसी अनलॉकिंग में नहीं होंगे, डायरेक्टली हम्म, अप्रैल में सारे के सारे लोग इसको विड्रॉ करके पूरे के पूरे कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। मैं अभी भी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। वन इज द फ्री कॉइन्स जो आपको एयर ड्रॉप में हम्म, मिले हैं, वो एक लॉकिंग पीरियड में रहेंगे, केवाईसी वुड बी मेड कंपलसरी। बट सेकेंडली जिन लोगों ने खरीदा है कॉइन, वो दोज हम्म, विल नॉट बी अंडर केवाईसी एंड दोज विल नॉट बी अंडर अ लॉकिंग पीरियड। वो लोग इमीडिएटली एक्सचेंजेस पर सेल कर सकते हैं जहां पर भी है। सो देयर आर two aspects of it, and actually Shiftal IEO is running very well. Everything is public, लोग जाकर पब्लिक एड्रेस देख सकते हैं शिफ्टल में, tronscan.io में SFL का किन किन लोगों ने शिफ्टल कॉइन परचेज किया, कितने होल्डिंग एड्रेसेस है, कितना सोल्ड है, एवरीथिंग इज पब्लिक एंड इंडिया इज एक्चुअली बाइंग द क्रिप्टो करेंसी. So just to maintain the authenticity of the product, there's few steps that we will take. So I really request everyone to just calm down, don't do fake refers, genuinely support the project, genuinely ask people to register through your link, but do not do any kind of fake refers. And what I will suggest users is that just have some patience on it. All the coins will unlock, do not worry. आजकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वेबसाइट में बिकॉज ऑफ टू मच यूजर लोड, साइट कभी कभी बीच में डाउन हो जाती है, सो प्लीज डोंट फ्रीक आउट. डेवलपर्स आर ऑलरेडी अपग्रेडिंग द सिस्टम्स. मोबाइल एप्लीकेशंस इज वन ऑफ द वेरी बिग अनाउंसमेंट. मोबाइल एप्लीकेशंस हैव बीन लॉन्च्ड. यूजर कैन गो ऑन प्ले स्टोर, दे कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन, दे कैन यूज द एप्लीकेशन एंड काफी सारी चीजों को हम कर रहे हैं. स्पॉट एक्सचेंज, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज विल बी कमिंग वेरी वेरी सून. So this is हम्म, all about it. The coin sale is happening and people will be able to withdraw in April for the bought coins. And जो coins उनको free में मिले हैं वो under locking period होंगे, but unlock जरूर होंगे coins हम्म, if you follow the steps. बिल्कुल, बिल्कुल। सो मैं अपने दर्शकों से ये चीज, एक एक चीज जो मैंने बाहर बहुत देखी है और थोड़ा सा एक लैकिंग इंडिया में देखी है, वो ये है कि बाहर गवर्नमेंट्स, बाहर के सिटीजन्स अपने एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कि एक एंटरप्रेन्योर की कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी पे कितनी बड़ी होती है, राइट। एंड जितना जितना ज्यादा एक कंपनी बड़ी होती जाती है, जितना ज्यादा एक प्रोडक्ट बड़ा होते जाता है, इकोनॉमी पे उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता जाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक जर्नी हालाँकि मैच्योर ऑलरेडी हो चुकी है इन अ लॉट ऑफ वेज़, अगर आप बाकी प्रोजेक्ट से देखें। uh, but still, there is a need for us to support it to become really, world class, to deliver beyond what people have seen already in the industry, right? तो हमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने entrepreneurs को सपोर्ट करना है। एंड ऋषभ जैसे वेल इंटेंशनड, जिनकी जिनकी यू नो बहुत हम्बल शुरुआत है, जो इन अ लॉट ऑफ वेज पहले टाइम अपनी फैमिली में एंटरप्रेन्योरशिप करें, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो हमें पेशेंस दिखाना, हमें ये समझना कि क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्यों टोकन अगर आप एयर ड्रॉप से भी ले रहे हैं, आप उसको क्यों सेल नहीं कर सकते? आप सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टोकन लिस्टेड नहीं है। टोकन लिस्ट होगा, उसका प्राइस डिस्कवरी होगी मार्केट में, फिर आप जाके सेल कर पाएँगे, राइट? तो आप समझें उस पूरे प्रोसेस को। हर चीज़ एक 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 तरीके से हो रही है, राइट? नाउ so pay attention to that, have some patience, support the project because इस प्रोजेक्ट को जेन्युइनली एक अच्छी कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट की विजन बहुत हम्बल और बहुत ही वेल इंटेंशनड है। तो और मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं फाउंडर्स, टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। मैं खुद 2-3 साल से देख रहा हूँ। शुरू के टाइम में जब कुछ पैसे नहीं होते थे, कुछ कुछ वो नहीं था, एक इतनी हम्बल बिगनिंग थी, तभी से मैं मैप कर रहा हूँ। तो we need to support our entrepreneurs, and Rishabh will support you through the way, Thank you so that much, is for Akshay. sure. But again, getting into further aspects, एक एक क्वेश्चन जो हमारी कम्युनिटी बहुत पूछ रही है, was कि आपका रोड मैप क्या है?
विजन फॉर प्रोडक्ट्स, राइट? जैसे ओंकार, जिनका अभी कमेंट हाईलाइटेड है, इज वो पूछ रहे हैं कि मोबाइल ऐप कब आएगी शिफ्टिंग की, राइट? आपने अभी बताया कि स्पॉट एक्सचेंज का विजन आपने किया, आपने ऑलरेडी सोचा हुआ है। इज देयर अ विजन फॉर मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन द फ्यूचर? और आप किस तरीके से, हम आपको बिल्कुल डेट पे अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे, समझेंगे कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप कब कब सोचते हैं Yes. कि ये सारे फीचर्स आएंगे टाइमलाइन में, जो अभी गति है एग्जीक्यूशन की उसके हिसाब से? यस, सो बेसिकली पहले मैं ओंकार जी के क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। शिफ्टल मोबाइल हम्म, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी लाइव। शिफ्टल की हम्म, मोबाइल एप्लीकेशन आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। आईफोन के हम्म, ऐप स्टोर पे इस महीने के एंड तक की एप्लीकेशन जरूर आ जाएगी। फिलहाल हम्म, में मोबाइल प्ले स्टोर पर, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है एंड इट हैज gained more than 4.9 star ratings, more than 5,000 downloads already हो चुके हैं because of the airdrop, of course. And this is something that is already live. Talking about the roadmap, on shiftalcoin.com, मैं सभी यूजर्स को कहना चाहता हूँ, just open shiftalcoin.com once. shiftalcoin.com की वेबसाइट पर on the front page you can see the roadmap. So the basic हम्म, roadmap that we have: in 2019 we started with the development of the project. In 2020 we got registered, we got the licenses and all of stuff. Then in 2020 August we launched the exchange. 2020 September we started with the marketing. 2021 March we actually connected with good investors, with good partners. We started with the actual marketing of the product and the product हम्म, got launched. In 2021 and we opened up IEO platform where people can actually buy the coin. IEO platform को हमने open किया. In 2022 now we have launched the mobile applications. If I'm हम्म, talking about the future roadmap, the next immediate thing that will be coming into play is launching Shiftal coin on other exchanges as well as launching a spot exchange. Now when I talk about a spot exchange, margin and futures exchange will come with it. जब भी हम हम्म, अपनी स्पॉट एक्सचेंज को लॉन्च करेंगे, which will hopefully come in Q2 2022, हम्म, इसी साल के मिड हम्म, तक हमारी स्पॉट एक्सचेंज आ जाएगी एंड उसी स्पॉट एक्सचेंज के साथ आ जाएगा मार्जिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये सारी चीजें आप सबको देखने को मिल सकती हैं हमारे आने वाले रोड मैप में। एंड एज सुन एज अ स्पॉट एक्सचेंज इज लॉन्च, हमारा फ्यूचर विजन है इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन को ऐड करना टू मेंटेन एन इकोसिस्टम। एंड इफ आई टॉक अबाउट a very broad scope, I don't want to make fake promises, but what my vision is personally, we will also include gold and crude oil to Shiftal once we have launched our own spot exchange. So talking about the future of the project, we will launch spot हम्म, exchange, margin exchange, future exchange, electronic money institution, debit cards, and then move forward with whatever we can add into the ecosystem. Just एक नींव रखनी जरूरी होती है। नींव हमने P2P exchange से रख दी। P2P exchange, right now the exchange which is in the market, Shiftal.com, is just a part of Shiftal ecosystem, and there are a lot of new projects, new products. So yes. बिल्कुल, बिल्कुल। सो ऋषभ, आपकी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना जस्ट अ टाइम सेकंड, निकाला। या आई एम प्लीज़। सॉरी। एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रिवार्ड्स कब मिलेंगे? इधर मत हुँ, पूछो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इस चीज का मैं रिस्पॉन्स करना चाहता हूँ कि टाइम again, my team is on Telegram channel, very active on YouTube, on all social media platforms. We are telling users कि rewards users को कब मिलेंगे। Even अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताकर हटा हूँ, I will just repeat it for this user once, कि rewards will start unlocking in April। जैसे ही एक प्राइवेट पब्लिक से लैंड हो जाती है शिफ्टल की अप्रैल में, जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो अनलॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडिंग द केवाईसी, प्रोवाइडिंग द राइट डिटेल्स ऑफ द यूजर्स एंड विद द लॉक इन मैकेनिज्म। डेली बेसिस पे पहले दिन से ही कॉइन्स थोड़े 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 अनलॉक होने शुरू हो जाएंगे और लोग उसको विड्रॉ करके काफी सारी एक्सचेंजेस पर जाकर सेल कर सकते हैं। तो रिवॉर्ड्स अनलॉकिंग विल स्टार्ट इन अप्रैल एंड। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक एक क्वेश्चन और जो हमारे यूज़र्स से आ रहा है, एंड इस पे मेरे को आपकी राय भी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक यूज़र ने हमारे पूछा है कि वज़ीरेक्स और अदर एक्सचेंजेस में कॉइनडीसीएक्स में कब टोकन लिस्ट होगा? वेल इस पे इस चीज का मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ कि इफ यू हैव सीन वजीर एक्स ऑन CoinDCX or other tokens on such related platforms. So the thing is कि right now people know about CoinDCX, know about WazirX because the kind of marketing that they're doing. They have one of हुँ, top India celebrities promoting their coin. We are slowly getting there, and once we launch our own spot exchange, ना please users को मैं specially कहना चाहूँगा, don't
think and don't wish the coin to be on very good exchange. Instead, Mm-hmm. wish product Shiftal to be a good exchange in itself. हम खुद की exchange है यार, मतलब हमारी spot exchange आने वाली है. आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर क्यों जाकर Shiftal को ट्रेड करना है जब आप Shiftal पे ही Shiftal को ट्रेड कर सकते हो? तो answering about the users questions, Shiftal will be launched on very good exchanges. I'm not sure if we talk about WazirX, CoinDCX, because they are our direct competitor. Right now, we are just a P2P exchange, but जैसे ही अपनी spot exchange को launch करते हैं, तो it will be in direct competition. You cannot see BNB, you cannot see BitBNS coin on CoinDCX. You cannot see such coins. यहाँ पर तो एक country में we are making an ecosystem. If we are saying we are one of India's top 5 exchange, तो हम उन्हीं टॉप 4 एक्सचेंजेस में वो भी हमें क्यों लिस्ट करेंगे? दे कुड बी अ थॉट बिहाइंड इट. Maybe in future collaboration we have such relations with such exchanges and we launch our coin there, but that's something that I don't want to get in right now. I just want users to have faith in Shiftal कि Shiftal एक खुद बहुत बड़ी spot exchange बन जाएगी and users को Mm-hmm. किसी और exchange पर जाना नहीं पड़ेगा Shiftal को trade करने के लिए. They will have liquidity, they will have volume, they will have everything Mm-hmm. to trade with on Shiftal exchange itself. But yes, Shiftal will launch SFL on very big exchanges very soon. It's being listed on CoinsBit India on 26th January, Republic Day वाले दिन. On 31st January, it is being listed on CoinsBit Global. So दो exchanges पर इसी month launch हो रहा है हमारा coin, and forwarding the public sale. जितनी हमको ज्यादा सेल आती रहेगी, everything is being invested into the marketing, everything is being invested into the listing. और हम बहुत अच्छी exchanges के साथ भी contact में हैं. I won't say the name. And yes, Prashant ji, I am the CEO of this exchange, not the owner, but the CEO, founder and CEO of the exchange. And ये मैं सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि Shiftal will actually launch on good exchanges, but please expect Shiftal to be a good exchange, यार. बिल्कुल, बिल्कुल। एंड ये बात मुझे सुनने में भी बहुत अच्छी लगी। अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में बाइनेंस के सीईओ ने भी एक चीज़ कंप्लेंट करी थी कि बाइनेंस के वर्ल्ड के टॉप 3 कॉइन होने के बाद भी में से एक होने के बाद भी कई सारे एक्सचेंज उनको लिस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? ये इससे बड़ी कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या हो सकती है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि शिफ्टल को अपना थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू सी इट्स वैल्यू। उसका अपना ही इकोसिस्टम में अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो एक एवेन्यू आपके लिए है अपनी वैल्यू रियलाइज करने के लिए। सो इंडिया से एक अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, एक शानदार एंटरप्रेन्योर, एक शानदार यू नो प्रोडक्ट निकाल रहा है, एक ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुका है इन इन अ लॉट ऑफ वेज, और वो संघर्ष अभी जारी है। तो हमें जरूरत है, इट इज मोर देन इम्पेंडिंग अपॉन अस कि हम सपोर्ट करें। अभी वी नीड टू सपोर्ट आवर एंटरप्रेन्योर, वी नीड टू सपोर्ट ऋषभ एंड हिज टीम in this wonderful initiative. He's taken enough of the time today. So Rishabh, thank you again for taking out this time. बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने you know जब डे 1 था तो हम आपके साथ थे, और आप अपनी अपने विजन को शेयर कर रहे थे, क्या आप चाहते हैं अचीव करना, वो शेयर कर रहे थे। और अब आप अगेन 2 साल बाद फिर से आके आप ये शेयर कर रहे हैं कि ये प्रोग्रेस है, यहाँ पे हम पहुंच गए हैं, यहाँ हमें जाना है, राइट? सो आई लव द humble and the honest approach. And thank you for coming on our platform Thank and you talking very much, about Akshay. I must say again that I really remember that conversation, and उससे काफी आगे हम progress कर चुके हैं, and it's always fun to talk to Blockchain India guys. I guess you guys are a community which are actually guiding people about it. you. Usually what communities do, it's just about creating hype around the wrong coins. But what you Hmm. guys are doing, you're actually educating people over crypto. And I personally know for a fact that if I did not had a conversation with you 2 years back, you guys would Uh-huh. not have agreed to come on this call to do this Yeah. fire chat if you did not believe in it. Hmm. आपने एक message भेजा था Absolutely. अक्षय कि after a lot of hustle you are here. So I know that you guys support us, and उसी चीज की हम मेरे को जरूरत थी. And as I told you, मुझे था कि once the exchange makes it big, I'll be Hmm. first one to come on the first channel would be Blockchain India. And I really wish your community well. You have very good brains out there. Document Studios, Blockchain India, really support you guys, and I'm waiting for future collaboration and Hmm. how we can see each other rise towards.
top of the Indian crypto community. So thank you Thank very much you. for the call, Akshay. थैंक यू सो मच ऋषभ. आई थिंक आपकी आपकी ये जो अप्रिसिएशन है वो हमारे लिए तो बहुत मायने रखती है, क्योंकि यू नो ये लॉन्ग जर्नी है. इसमें ये जो छोटे माइलस्टोन्स होते हैं ना जिसमें अप्रिसिएशन मिलती है, दैट इज बियॉन्ड व्हाट यू वुड अज्यूम इट. The effect is beyond what you would think it is. So thank you so much for appreciating that, and thanks again for doing this today. And we'll stay in touch, and Thank you so we'll let the community also support the project, and then we'll come back again someday when much. it's the right time to talk to you again. Yes, looking forward to that, All right. Akshay. Thank you very much. Thank you, All community, to my friends, everyone. Thank you very much for joining the call, right. and see you also. Absolutely. And to the community, fantastic start to 2022. I think our founders are making a mark all across the globe, not just in India. So, make sure that you pay enough attention to projects like, Shiftal. Shiftal की token sale जारी है, airdrop, phases on है. आपको कहाँ पे कैसे support project को support करना है वो आपका initiative है. आपका अपना पर्सनल sort of प्रेरोगेटिव है, बट सपोर्ट जरूर करिए. एक बार जाके चेक जरूर करिए उनके एक्सचेंज के साथ, उनके P2P मार्केट प्लेस के साथ एक बार इंटरेक्ट जरूर करिए. अगर पसंद आए तो और करिए आगे, और इसको इस्तेमाल करिए. अगर नहीं पसंद आए तो यू कैन लेट इट बी, बट एक बार जाके प्रोडक्ट को यूज जरूर करिए. Right. And thanks again for tuning into this. Thank you. We'll come again with another interesting episode. Bye bye, Bye everyone. bye. Bye, Bye Rishabh. bye. Bye, community. Take care.